Hi guys. Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. And we are back after a break. So, Kunal, क्या series था यार? Australia, Pakistan. First of all, give my dues to me for predicting this series right and going against the Yeah. popular convention of yours and Pratik. So, But but still your prediction was 3-0. So it was not exactly 3-0, but in the end, yeah, um, Australia did win. I mean, at least you predicted Australia to win. We did not. To be honest, yeah, I was not expecting Australia to win because they're going to Asia after a long time. They don't have a very good record in Asia in general, and Pakistan team felt pretty strong. They were pretty strong though, but honestly, this Australia team has that fire, and they fight hard to win. This Australia team has the fire which the team 10 years back used to have. So I'm loving, how what Cummins has done with the Australia team. no, I knew Australia were going to win because just the way that they built the hype around this series before coming here, I felt that they were Yeah, really they in took it. here Yeah, to they win took it this. very And seriously. Yeah, the they were way they preparing very well. announced the full strength squad announce किया और उसके बाद जो उनका social media पे था कि we are going to enjoy coming to Pakistan. So what do you have to say मतलब अगर एक series का round up if you have to. Yeah. So for a roundup to the series, I think it starts from last WTC cycle. Aussies are pretty disappointed that they were not able to go to the finals. And they was missing it by such a small margin. They could not. They wanted to go to South Africa, which they could not. And after that, I'm pretty sure these guys. I mean, Aussies love to win. They want to win. They want to dominate. And I really like how they play the cricket. And they were doing that. They had prepared really well. You had a lot of, I mean, all the players being very excited, posting a lot of things on social media, getting to Pakistan. So these guys went in with all the preparation they could, and they were in it for the win. It's sad that we Uh, had, such flat pitches, but I have yeah. one question for you, Kunal. Like, तुझे ऐसा कभी लगा कि Pakistan wanted to win here, like in any of the test matches? Did you feel they wanted to win the Yeah, and match, win the test? they were defensive. They wanted to save the test matches. It felt like that. यार इतने फ्लैट ट्रैक्स तो नहीं बनाने चाहिए अब तो कोई नहीं बनाता इतने फ्लैट ट्रैक्स तो थोड़ा they could have spiced up the pitches, but yeah, Pakistan, they should have been, I mean, they could have been a lot more aggressive. It was a home series anyways, right, for them. Yeah, they were defensive, and I mean the pitches they prepared were defensive. ऐसा लग रहा था बस Really इनको defensive, मैच man. सेव करना है और इस सीरीज से निकलना है इनको unscathed. मतलब they wanted to go unscathed from this series without any losses, and they made the pitches like that. I don't know, I don't think ये team management ने ऐसा pitches मांगा था, but I think the pitches पाकिस्तान में ऐसे ही रहते हैं normally. They are very good batting tracks, but surprising thing was there was nothing for the much for the spinners. मतलब कि day 4 day 5 में भी spinners के लिए कुछ ज्यादा नहीं था. तो it was surprising, and मैं just series का मतलब timeline थोड़ा discuss करूंगा. First of all, मैं अपने आप को credit देना चाहता हूँ because I predicted a lot of things correct here. So just want to say, Okay. Travis Head, I told before the series that Travis Head will not be able to play much here, and that came true. And I said Australia will win the series. I told 3-0, and I'm quite sure अगर pitches fair होते तो ये लोग 3-0 भी जीत जाते पाकिस्तान से. हाँ, ये लोग जीत सकते थे, लोग जैसा खेल रहे थे, absolutely. हाँ, just because pitches were so damn boring, तो ये लोग जीत नहीं पाए, and they did well. They should have won the second test. कुछ catch drop हुए, कुछ स्मिथ ने काफी कैच ड्रॉप किए, ख्वाजा से हाँ, कैच ड्रॉप स्मिथ हो को गया अचानक से क्रूशियल क्या वन. हो गया? That's odd. Dropping catches like that in the slips, but yeah. Very odd. And I think वो मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और इंग्लिश कंडीशंस में बहुत अच्छा कैचर है, बट समहाउ वो जो स्पिन के लिए आई डोंट थिंक ही इज दैट गुड अ स्लिप फील्डर टू स्पिन. तो उसने काफी कैचेस वहां पे छोड़े. तो आई वांट टू डिस्कस द सीरीज टाइमलाइन. नाउ पहला जो टेस्ट सीरीज था रावलपिंडी में. Before that, I want to give you credit for one more thing, for making Pat Cummins come up again. We made comments like Pat Cummins MCG में अच्छी bowling करता है, Pat Cummins से कुछ नहीं हो जाएगा. But Pat Cummins did really well, dude. Like 8 wickets in this test match. It was really good. Yeah, man. He bowled his heart out. I mean, and it was such a He's an tough out and out series, test man. match bowler. ठीक है. He's an out and out test match bowler. Even whatever the conditions are, he will go in and put in the effort. Like we have Broad or Neil Wagner doing it. He's a really good test match player.
Yeah, and I mean, जो tough series था, I mean 15 days of hard grueling cricket. मतलब पाकिस्तान सोच रहे थे इनको हम थका देंगे, मतलब ये लोग इतने थक जाएंगे by the third test, they won't be able to stand up. But ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. I mean, the way Pat Cummins and Mitchell Stark bowled on day 15 of this series, 15th day of the series, was just amazing. I mean, ऐसा लगा नहीं कि ये लोग थक हार चुके हैं and they're mentally पूरा थक चुके हैं. Even they were quite fresh, and hats off to Pat Cummins for that declaration and giving Pakistan a chance. मतलब कि उन्होंने he rolled a dice कि भाई, if you have the guts, go and win the test match if you really have it in you. मैं तुम्हें दे रहा हूँ 120 ओवर्स में 350 का टारगेट, तुम बना लो अगर तुम में है ये दम. But Pakistan, as I said मतलब earlier कि they were only looking to save Defensive test matches. approach. अगर I'm sure अगर पाकिस्तान थोड़ा इंटेंट दिखा था दोनों टेस्ट मैचेस में, तो they could have won both the test match, or they could have saved this one at least. They would have put Australia on the back foot. ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 2 सेशंस में इतने अटैकिंग फील्ड रखे थे. सिली मिड ऑफ रखा, शॉर्ट लेग रखा, लेग स्लिप एंड स्लिप, 4 कैचर्स सराउंडिंग द बैट रखा था ऑस्ट्रेलिया ने. दैट मीन्स पाकिस्तान वेर टू डिफेंसिव. तो ऑस्ट्रेलिया को पता था कि ये लोग इतना डिफेंसिव खेल रहे हैं कि वी कैन गो ऑल आउट अटैक ऑन देम. वो नहीं हो पाता अगर पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा एग्रेसिव खेलते. बट because we are doing this at the end of the series, so I just want to just discuss the series timeline. Yeah. So Rawalpindi test match का तो discuss करके कोई फायदा नहीं है. It was a pure highway and there is no discussion needed. And Pak were without their first choice bowlers like Hassan Ali. कराची टेस्ट मैच में स्वेप्सन का डेब्यू होता है, हेजलवुड को बैठा देते हैं, which is even shocking. Actually Swepson ने कुछ भी नहीं किया सेकंड एंड थर्ड. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट स्वेप्सन? मतलब वो तो सिर्फ फुल टॉस डाल रहा था. लेकिन they were expecting कि लास्ट में स्पिन होगी, थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा, राइट? बट that never happened. And Swepson is a very undercooked spinner, bro. They just, I mean, I think they pushed him too much, a bit too early. He needs to play a lot more to become a good bowler. ऐसे फुल टॉस तो नहीं मार डालना होता है. इससे अच्छा तो लैबुशेन और स्मिथ बॉलिंग कर लेते. But yeah, it was बहुत अच्छा बॉलिंग किया स्वेप्सन से. Yeah, Labuschagne has been good काफी time से. Yeah, Labuschagne is a free cricketer, bro. He can do anything. बाकी, yeah, it was odd to see Hazelwood not play. Dude, Hazelwood has been, I mean, I think he has been the best bowler, right, in all formats. I mean, Pat Cummins has also been pretty good, but it was a gamble to not play him and play Green. But you criticize Green as well, right? I mean, both of us did. But he played well. But yeah, so I'm coming to that now. See, so Pakistan had Australia Karachi में second test में का discuss कर रहा हूँ मैं भी. So 405 for 7 था पाकिस्तान कराची में, एंड मुझे लग रहा था कि ठीक है 420 430 तक ऑल आउट कर लेगी ऑस्ट्रेलिया को. बट वहां से कैरी ने 93 मारा एंड 556 फॉर 9 डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया ने. फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा एक्चुअली धीरे खिलाई ये टेस्ट मैच में. दे ओनली स्कोर 250 रन्स पर डे, बट दे गेव अ टारगेट ऑफ 506 टू पाकिस्तान. 21 for 2 था पाकिस्तान और 150 ओवर्स बचे थे टू प्ले आउट. And hats off to Pakistan for drawing this test match. Abhi now when it comes to this that test was a good match, effort. Yeah, it was a good effort. That was a really good effort when for it Pakistan. comes to Lahore test, so Australia were 8 for 2 when the test match started. That is the amazing scenes. कहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, मैं बस वो मतलब एक दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीते. They are 8 for 2 and at the end of day 1 they are 224 5. And day 1 belonged to Pakistan. अगर तुझे याद होगा प्रतीक वहीं से बोलना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान will win, ठीक है, and Australia will lose even after dominating the series. तो and day 2 में ग्रीन और हेड, कैमरन ग्रीन, जिसको मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जॉश हेजलवुड वुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन. आई मीन, या फिर एस्टन एगर या कुछ थोड़ा ब्रेव मूव कर सकता था ऑस्ट्रेलिया. बट हैट्स ऑफ टू ग्रीन, उसने 79 रन्स का जो इनिंग्स खेला है इस टेस्ट मैच में. एंड कैरी ने जो 67 रन्स का इनिंग खेला 60 के स्ट्राइक रेट से. तो आई विल टेल यू लेटर व्हाई आई एम डिस्कसिंग द स्ट्राइक रेट. तो दैट एक्चुअली टुक द टोटल टू 391. एंड उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान कोलैप्स 20 for 7 after being 248 for 3. Yeah, man, that was a very
pre-collapse, मतलब अचानक से that was really pathetic from Pakistan's part to collapse like that. And it was with a 25 over old ball. तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो आई थी पाकिस्तान में फॉरेन कंडीशंस कभी आए नहीं, ये टीम कभी पाकिस्तान में खेली नहीं, एट मैक्स यूएई में खेली, ठीक है. पाकिस्तान इज नोन फॉर रिवर्स स्विंग. इफ यू सी वसीम अकरम और शोएब अख्तर एंड वकार यूनिस, ये लोग पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग स्टार्ट किए थे. तो पाकिस्तान इज नोन फॉर दिस रिवर्स स्विंग, और इनके कंडीशंस में रिवर्स स्विंग करना इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी. मतलब ये लोग ना डोमेस्टिक में खेल खेल के ये लोग रिवर्स सीखते हैं और फिर करते हैं. और मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस ने एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच के अंदर में रिवर्स स्विंग सीख लिया. दे मास्टर्ड पाकिस्तान एट देयर ओन कंडीशंस. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो 24/7, आई मीन दैट वाज द कोलैप्स दैट टर्न्ड द एंटायर मैच. उसके पहले आई मीन अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, इमाम ने स्कोर किया था. सो 24/7 एंड एट द उसके बाद शॉकिंग एंड ब्रेव डिक्लेरेशन, 350 का टारगेट 120 ओवर्स में, लेस देन 3 runs per over required for Australia, less than 3 runs per. I mean, Pakistan could have easily shown some intent. 73 for no loss at the end of day 4. हाँ यार, ठीक है. मतलब और they're in really good even position after यार. dominating, हाँ, जीत जाएंगे. मतलब जीत जाएंगे. 73, 278 runs needed on the final day. सेकेंड टेस्ट में 314 रन चाहिए थे और इस बार 278. और ये लोग फर्स्ट सेशन इतना घटिया खेले, मतलब बोथ टेस्ट मैच, मतलब यार 63 रन्स 63 रन्स 63 रन्स का तुम अगर फर्स्ट सेशन खेलते हो, तुम एटलीस्ट 80-90 भी नहीं कर रहे हो फर्स्ट सेशन में, देयर इज नो वे you are going to, you are allowing the opposition to attack you full all out. I mean, that is the only thing, you are allowing the opposition to bowl you out. So I mean, that's what I have to say. मतलब कि Pakistan had all the cards in their favor and they did not play any of the cards. And finally, Smith ने catch ले लिया. Lyon delivered in the 4th innings. Smith ने बाबर का catch ले लिया, very crucial wicket, जो लग रहा था मैच सेव कर लेगा. अजहर अली थोड़ा अनलकी रहा वो स्निकोमीटर का, but man, amazing performance. रिवर्स स्विंग किया कमिंस ने. स्टार्क ने फर्स्ट इनिंग्स में भाई फवाद आलम को तो ओन कर लिया स्टार्क ने. What do you have to say about Mitchell Stark? हमने कमिंस और ख्वाजा का तो लगा दिया. ख्वाजा ने ठीक है यार, ख्वाजा पाकिस्तान के लिए खेलता तो he would have been a पाकिस्तान, एक्चुअली वो पाकिस्तान के लिए खेलता तो उसको कभी चांस नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान वाले फवाद आलम को जब 11 सर रखे हुए हैं तो उसको भी चांस नहीं देते. बट व्हाट अ सीरीज. सो सम वर्ड्स अबाउट ख्वाजा एंड स्टार्क. ये दोनों थोड़े अंडररेटेड हीरोज हैं, एंड लायन आल्सो. Yes, Khwaja has been amazing. By his first match century mari, and he has kept on repeating his performance from the last Ashes Test. Just now, he got a lucky chance to play, right? I think he has cemented his spot as a partner to David Warner for now. I mean, he's scoring runs consistently. No doubt the pitches were flat, but the Pakistani bowling was pretty good, has been pretty good. Usne deliver kiya hai अच्छे से भाई in these conditions. He plays spin really well. He's really good. And Stark, people, time and again, people keep questioning Stark on how good a test bowler he is. No doubt he's really good in T20s, one days, but yeah, he delivers, bro. He has pace, he has some variations, he has reverse swing, he delivers. As a flat track, you need players like him to come in and bowl. Yeah, Aussies have a test match. He's a test match bowler as well. He's pretty good. And yeah, Lyon, right? Lyon, though, I mean, Lyon is one of the best spinners out there right now. He contributed a lot, at least in this innings. I mean, अभी last 5th day पे. If you go dismissals by dismissal, Kunal, there was one very interesting dismissal. Just want to talk a little bit about the gameplay. तो इमाम उल हक को उसने पूरी सीरीज में राउंड द विकेट किया, राउंड द विकेट कर रहा था, और विकेट भी लिया इमाम का राउंड द विकेट आके. बट कल उसने ओवर द विकेट किया इमाम को. लेग स्टंप के बाहर पिच हो रहा है, देयर इज नो चांस ऑफ एमपीडब्ल्यू, एंड इमाम कुड हैव किक्ड द बॉल. मतलब उसको बस किक करना था बॉल, ही नीड नॉट हैव प्लेड द बॉल. बट इमाम एक्चुअली वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया उस एंगल से, उसने एक्चुअली बॉल को प्ले किया एंड वो आउट हो गया. बाबर आजम को जो बॉल किया, दैट वाज अगेन. और लोग बोलते हैं लायन 4th इनिंग्स में परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन अगर तू देख यार, हेडिंगली में उसने बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू तो कर ही दिया था, रिव्यू नहीं था उनके पास. पंत को उसने, टिम पेन ने 2 बार ड्रॉप किया था सिडनी में, जो ड्रॉ किया इंडिया ने. सो इट्स नॉट दैट लायन इज अ बैड बॉलर इन 4th इनिंग्स, ही इज जस्ट बीन अनलकी, और थोड़े नर्व्स
नर्वस हो जाता है थोड़ा, बट आई थिंक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, और उसने दिखा दिया कि इज अ 400 विकेट, मतलब उसका करियर है जो इतना डेकोरेटेड करियर है, एंड व्हाई ही इज सच अ कंसीडर्ड सच अ टॉप स्पिनर। मतलब अश्विन से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में हमें मैचेस जिताए, एंड लायन ने पाकिस्तान में कल जिता दिया। फाइनली ही हैड द फाइनल से, टेकिंग अ फाइफर इन द फोर्थ इनिंग्स। So that was really good. I mean, from Nathan Lyon. So Australia win the Benaud Qadir Trophy. There is one more thing that I want to emphasize. I will just share my screen because I want to emphasize this Yeah. point actually a bit more. So yeah, this is our predictions, and I'm the only one right. So yeah. Yeah. So anyway, so in dead pitches में Kunal, I feel the strike rate is very important because ultimately you know कि 5 day का गेम होने वाला है, तो you need to score faster. जो टीम फास्ट स्कोर करेगी 5 day मैचेस में, they will ultimately be on the top and they can put the pressure. On the top, yeah. अगर तू यहाँ पे स्ट्राइक रेट्स देख, उस्मान ख्वाजा का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 50 है, अब्दुल्ला शफीक ने 397 रन्स बनाए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 40, बाबर आजम 47, इमाम उल हक 40, अजहर अली 42, स्मिथ ठीक है 37, बट कैरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए 58 के स्ट्राइक रेट से, लाबुशेन ने काफी रन्स बनाए 60 के स्ट्राइक रेट से, वार्नर ने काफी रन्स बनाए 59 के स्ट्राइक रेट से, and I think this proved to be the difference ultimately. And if you see bowling also, I'll just like to show our viewers the bowling this thing. Yeah. So if you Man, see this 12 wickets by economy, Cummins. 12 wickets by Cummins, and you see the economy rate here. So if you see this economy column, I hope you're able to see this, Kunal. Yeah, it's pretty clear. Yeah, so economy, Pat Cummins का 2.45, नेथन लायन का 2.46, एंड शाइन का 3, नोमान का 3, स्टार का 2.65. तो इवन कैमरन ग्रीन का इकोनॉमी 2.55, और फहीम अशरफ जिनको पाकिस्तान को हर टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए. दैट इज वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू डिस्कस. एक तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने फ्लैट पिचेस पे भी काफी अच्छा रेस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को, एंड देयर बैटर्स स्कोर्ड द रन्स मोर एग्रेसिवली. दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. और दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि फहीम अशरफ को नहीं खिलाना, he adds the balance to the side. फहीम अशरफ at number 7, he is a very good batter. ठीक है, एक मैच फ्लॉप हो गया तो तुम उसको हटा ही दिए, और साजिद खान जब नंबर 7 पे, साजिद खान का हाईएस्ट स्कोर 20 रन है, और यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू सेव द टेस्ट मैच फॉर यू with 35 overs to go. That's not going to happen. So Pakistan messed up badly, and Australia deservingly get the Benaud Qadir trophy. Amazing test series, 15 दिन पूरे हुए, and I followed a lot on CricBuzz actually because ये weekends में इनके ज्यादा matches नहीं हो पाए, तो I followed a lot on CricBuzz, लेकिन काफी मजा आया, and I hope this series lived up to the expectations. अगर draw हो जाता तो मैं बोलता कि यार क्या boring series था, but what do you have to like final? What do you have to say about this series? What we were expecting this to be an interesting series, but we were expecting more results. So it was slightly disappointing to see flat tracks at the start. 2 test matches getting drawn, but the matches were still interesting, right? We saw Pakistan having chances, Australia having chances. We saw really good collapse. We had some players playing really good innings, some bowlers taking some really good wickets. So overall, it was pretty interesting 15 days of cricket. Or last में Australia won deservingly. After this series, I would love to see how this team fights in India. India में, obviously it's very, very difficult for a team to win, but I'm looking forward to see the fight from this team. They will fight a lot at least. I'm going to follow every Australian test match from now on. I'm so impressed by this team. And यार एशिया में आके जीतना ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कभी भी it's a big achievement, क्योंकि एशिया में teams will bury you. Like पाकिस्तान ने जो कोशिश किया, they tried to bury Australia, थका देने का कोशिश किया, make them tired mentally. But hats off to Australia, who kept coming back, fighting till the last 15th day, grueling
conditions, बहुत गर्मी थी लाहौर में, और still they managed to get the win. And अब WTC points में Australia is on top with 75%, and Deservingly. Pakistan has slipped to 52%, and even South Africa is now 60%, and India is 58%. So Pakistan has slipped to fourth now on the WTC table. But obviously Australia has two more away tours, Sri Lanka and India, and Pakistan has only one very easy tour to Sri Lanka. तो अभी भी कुछ भी हो सकता है. We cannot say much about WTC. But yeah, great, satisfying series. Ab we are ready for the IPL now. ये hardcore stuff था. मतलब the great cricketers call it, this is the hardcore stuff. I mean, बहुत it was this was proper test match to the max. Players maxed up, playing 5 days out and out in the sun, flat track way. I love this Aussie team. Love the bowling. And Cummins का वो caught and bowled यार देख के मजा आ गया. उसने जो I think उसको अजहर अली को caught and bowled किया था first innings में, and he was like threw the ball. What an athlete Pat Cummins is. I mean, मैंने क्यों criticize किया I don't know, but मैं frustrated हो गया था क्योंकि मेरा prediction सही नहीं जा रहा था. इसीलिए मैं frustrated हो गया था. Even when Pat Cummins was selected as captain, you did not want him to become captain right back then. Yeah. But yeah, he's been a great he's captain. Pretty good though. He declared. I mean, very few captains could have taken that decision of declaring. That was such a risky declaration. और अगर कल ऑस्ट्रेलिया हार जाती, the last जाती, test match. और अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो they would have, लास्ट टेस्ट मैच में जैसे पाकिस्तान ने 450 बना दिए, और मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो he would have been criticized so much. But Pat Cummins is a genius. He knew that Pakistan जो 450 रन भी बनाए थे, they played very slow. They were batting very defensive, और उसको पता था ये लोग ऐसी defensive batting करेंगे. तो he knew that this is going to happen, and even Swepson ने तो bowling ही नहीं किया. Swepson, they won with 10 men. They literally won this test match with 10 men, and only Lyon as the spinner. So hats off to Cummins and team. So Kunal, let us discuss about some other series now. So I want to take your opinion on South Africa Bangladesh series first, because that is the more interesting series now. So इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया था साउथ अफ्रीका ने 3-0. इंडिया गॉट बॉम्ब्ड एट द पाल हार्बर, एंड साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश ने क्या कर दिया, बॉम्ब कर दिया भाई. मतलब क्या था टास्किन अहमद का वो स्पेल जो उसने डाला, और अमेजिंग. कुछ बताओ उस सीरीज के बारे में. Yeah, man, I had bets on South Africa, bro. I was like, so sure South Africa आराम से जीत जाएगी. Oh my God. But man, South Africa, I mean, Bangladesh have come a long way now. Like they won 2-1 in South Africa against South Africa, and they won pretty convincingly first पहले match में. They scored 314 runs. They won by 38 runs. Last match में they won by 9 wickets. Bro, they've dominated South Africa. And this is a full team, ठीक है? I mean, almost full team you can say. Players are injured, but yeah, almost a full team. Yeah. Man. सेम टीम व्हाइट वॉश्ड इंडिया. तो यहाँ पे मैं दो चीज कहना चाहूंगा. बांग्लादेश हैव बीन रियली गुड एट होम, लाइक they have been dominating the home series, and they have not lost a series in last 4 years at home, and they're at the top of the World Cricket League ODIs right now. But obviously ये figures लगता है कि थोड़ा you take it in the context कि बांग्लादेश home series जीत रही है. But फर्स्ट ओडीआई में मैंने एक बहुत अच्छा चीज नोटिस किया. तो 25 ओवर्स तक बांग्लादेश वे स्ट्रगलिंग एक्चुअली, एंड देन देयर वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन शाकिब एंड यासिर अली, उनका जो नया एक प्लेयर है हु प्लेड वेल इन न्यूजीलैंड टेस्ट्स आल्सो. तो शाकिब एंड यासिर का जो पार्टनरशिप था उसमें उन्होंने 17 ओवर का पार्टनरशिप किया. फर्स्ट 10 ओवर में उन्होंने 50 रन बनाए. And if you see the next 5 overs, जो 35 overs से 41 overs का जो play था, उसमें उन्होंने 5 ओवर में भाई 80 रन बना दिए. मतलब I was shocked. मैंने सडनली स्कोर कार्ड देखा एंड आई वाज लाइक, और मैंने भी साउथ अफ्रीका पे बेट्स डाल दिए उसी टाइम. मैं बोला भाई क्या डोमिनेट कर रहे हैं ये लोग.
और दे एंडेड विद 314। मतलब 35 ओवर में वो लोग कितने थे, 160 थे वो लोग 35 ओवर में, एंड दे एंडेड विद 314। सो यू कैन इमेजिन लास्ट 15 ओवर्स में क्या किया है बांग्लादेश ने। ऑलमोस्ट 160 रन इन द Yeah, I लास्ट mean 15 ओवर्स। that kept a few wickets in hand, but हाँ बीच में, but जो भी है, I mean वो Bangladesh मेहदी does not हसन look ने like रबाडा Bangladesh को anymore. छक्के मारे लास्ट में। मेहदी हसन ने आके रबाडा को लास्ट में क्या छक्के मारे हैं, दैट वाज हाँ 2 छक्के अमेजिंग मारे थे मतलब। उसने, हाँ. एंड They फिर were not साउथ scared अफ्रीका। of this team, bro. This team had such a good bowling. You know, they had Ngidi, Rabada, Jansen, Maharaj. Bowling भी अच्छी थी इनकी. और यार एडन मार्करम को तो ड्रॉप, अब मैं तिम्बा बावुमा और पैट कमिंस के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है एडन मार्करम। ठीक है, इस चूतिए को मैं बहुत क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ अभी, एडन मार्करम को, क्योंकि ये साला डक पे आउट होके जा रहा है। मतलब यार ये ना पूरे टॉप ऑर्डर का विनाश कर चुका है साउथ अफ्रीका का। ही पुट्स एडिशनल प्रोसेस ऑन टेम्बा बावुमा एंड रासी वैंडरडुसन। उन दोनों को बेचारे को 5-6 ओवर स्लो खेलना पड़ता है, बिकॉज ये एडन मार्करम चूतिया शुरू में ही आउट हो जाता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मतलब क्या कर रहा है एडन मार्करम, ही वाज वन ऑफ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, पता नहीं क्या Yeah, हो गया है going उसको। to be. Yeah, और अभी वो I think बीच में सनराइजर उसने फिर से, हैदराबाद। हाँ, हाँ, बीच में फिर से थोड़ा अच्छा खेल रहा था. I think it was a very small phase of a few months. उसका फॉर्म बहुत खराब हो गया. Sunrisers will not play him, dude. Nah. We'll come to that discussion. So anyway, hats off to Bangladesh to win that series. They have started 2022 with a bang. New Zealand में टेस्ट मैच जीतना, फिर साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीतना, that is amazing from Bangladesh. So let's see if they can make some waves in the ICC tournaments, जहाँ पे Bangladesh have been, you know, all these their achievements get overthrown by the shortcomings in I'll be ICC back. tournaments actually. So that is the thing. And now I want to talk about you know, England and West Indies ka series. That series has been quite boring. 2 test matches were drawn. They were quite high scoring. But the third test match was at a venue I am not so familiar with. It is in Grenada, and that test match has been interesting. Pitches have been wild, and you know, wickets have been falling. But we'll have to see क्या होता है उसमें. Kyle Mayers bowled a good spell for West Indies. इंग्लैंड का भी काफी अच्छा क्रिस वोक्स ने स्पेल डाला है, तो we'll have to see what happens if there is a result possible, because Kemar Roach again showed that he is such a fighter with the bat, and he has ensured that West Indies take the lead surprisingly. पहले तो साकिब महमूद और जैक लीच ने 90 रन्स का 11th विकेट पार्टनरशिप कर दिया, and हाँ यार, now मतलब we have Kemar उन्होंने Roach. बचा लिया किस तरह. इंग्लैंड वर्स लग रहा था 100 भी नहीं बना पाएंगे एक टाइम पे, सीरियसली. Exactly. 67 for 7 इंग्लैंड था, 114 for 9, और वहां से 204 रन, अमेजिंग फ्रॉम जैक लीच एंड साकिब महमूद. तो अब वेस्ट इंडीज भी वही कर रही है. आई थिंक ओल्ड बॉल के साथ थोड़ा खेलना इजी है. तो अभी केमार रोच टिक गया है, अल्जारी जोसेफ, जोशुआ डिसिल्वा, ये सब टिके हुए हैं. काफी अच्छा बैटिंग किया इन्होंने. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दैट अंसारी गॉट सीरीज. आउट, बट या हाँ, अल्जारी गॉट यहाँ आउट. पे, या हाँ, but because of the small lead West Indies have, and this is like the second day only. I mean, अब आज तो थर्ड डे हो जाएगा. I think it's advantage West Indies now. I think West Indies will win this game and England will lose another series. या लेट्स सी. 54 इयर्स में सिर्फ एक ही बार इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज में सीरीज जीता है, तो पता नहीं ये लोग इस बार भी शायद नहीं जीत पाए. यार तो यहाँ से दैट्स जीतने के लिए they will need a दैट्स root and Stokes special. अबे लेकिन have you observed this thing? Here Stokes provides a lot of breakthroughs बीच में when England needs it. ही England is इज very वन ऑफ द टॉप heavily ऑलराउंडर्स. dependent वो on तो Stokes. नहीं, स्टोक्स तो है ही. एंड नहीं, वोक्स के ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी, बट वो भी डिसेंट कर रहा है. आई मीन उसको जब कंडीशंस मिल जाते हैं इंग्लिश टाइप के, तो ही आल्सो डिलीवर्स. बैटिंग में 25 उसने जो मारा, आई थिंक दोस वर क्रूशियल रन्स टू अवॉइड ऑल आउट ऑन 100, बिकॉज जैक लीच और साकिब महमूद तब आए जब बॉल काफी पुराना हो गया था. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वैसे काफी बोरिंग And सीरीज रहा है, नथिंग मच टू डिस्कस yeah, ऑन yeah. दैट सीरीज. आई मीन
Yeah, I mean तो England has questionable bowling decisions as well. I mean at least Broad को तो ला सकते थे यहाँ पे. They हाँ would have हाँ his डेफिनेटली experience would have helped a lot. दे आर डेफिनेटली मिसिंग ब्रॉड. ठीक है, एंडरसन को तुम रेस्ट करना चाहते हो होम सीरीज के लिए. यू हैव अ टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, यू हैव टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, न्यूजीलैंड. काफी बड़े टेस्ट मैचेस हैं होम पे. ठीक है, समझ आता है कि तुम एंडरसन को रेस्ट कर रहे हो, बट आई डोंट नो व्हाई ब्रॉड, who is at the prime of his career, why he is being Yeah, rested. yeah. I don't understand that. And Ollie Robinson जबकि तुम्हारा इंजर्ड है, मेन बॉलर ऑफ योर WTC, तुम ब्रॉड को नहीं ला रहे हो, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. So Kunal, we'll wrap up the international cricket discussion. And what a great historic win for Australia, touring after 24 years, and And winning it. they did it, and brilliant. So we'll have a video coming up on the IPL also, which is starting today. So that will be fun again. And that's it from us, guys. Keep following us, keep subscribing our page, and thank you all. Thanks and goodbye. Hey guys.